Hello friends, good morning, good afternoon and good evening. Welcome to Synapse Academy. Would request Kanu sir to check the mic. Mic check, ठीक है? Loud and clear. Okay. So friends, as you know, today the General Studies paper of OCS Mains 2023 finished. Voice is clear? Okay. Yes. So today the General Study paper finished. So आमे धीरे धीरे डिस्कशन करिवा कि केमिति आमे पेपर को अप्रोच करि परिया सो आमे पेपर GS-1 रो कोन लेसन हमको मिलला आमे नेक्स्ट ईयर जो मेन एग्जाम आमे दबा GS-1 को केमिति अप्रोच करिवा इंडिविजुअली आमे डिस्कशन करिवा कि हाउ टू अप्रोच GS-1 GS-2 GS-3 and GS-4. Okay, four subjects we will discuss. Okay, so first let us see the general study paper on, and one more thing, we have got many repeats from our test series in the general study paper also, that we will also discuss. Ki kemti it is not possible ki taha UPSC report se direct setup thoi dewa. No, not possible. Public Service Commission, they are experienced question setters. So if you can touch the boundary of that question also, then also people can answer, students can answer. That's what our motto is. So you all know that GS-1 250 marks, and group A, remember there are group A 12 questions, prati question 15 marks, and group B 5 questions, prati questions 20 marks, 250 marks. So, and you have to attempt 10 questions from here and 5 questions from there. Okay, 15 marks each. First question, expected question and overall assessment ethro General Studies 1 ro. Let us share what is my assessment of General Studies 1, kemti aschi, and what you can expect next year. Okay, first thing, I would request Kanu sir to come here, please. Kanu sir, come on, let us discuss with the students. And Kanu sir guided extensively students in the main test series. Okay, jo mane main test series Synapse re dousandi, they all know Kanu sir. And Kanu sir jodi mu ame discussion bi karuthile ki the pattern is more or less questions were expected. Yes, exactly. Expected lines question thila. And last year bi jemti world history question pilanga pai gote बहुत बड़ा थिला एतर सेटा पढी नि जाओ, and OPSC followed what it is mentioned in the syllabus. Students got relieved. Yes. So expected line re question thila, and second aspect thila ki questions were more or less direct. एमती किछि बंका टंका नथिला. Bearing few questions, yes, approachable. Bearing few questions, more or less questions were direct. Okay. Questions were expected, questions were direct. Okay. Synapse re jo mane bi test series last 3 years rank housandi, they all know Kanu sir. Kanu sir housandi porda pachar nayaka. Okay, you ask Sudhir Kumar Prusti, okay, rank 1 OCS 2021, how Kanu sir guided Sudhir. Okay, and if you meet Sudhir, whenever you meet, you ask about Kanu sir. Okay, so questions were more or less expected and direct. And next thing, this year, very important, Kanu sir have discussed this year they have maintained the division of marks. Mark division से maintain करछन. Last year जेमती माने GS-1 रे एपट सेपट किछ पड एथरो पढी छी गोटेटा क्वेश्चन ओडिसा इकोनॉमी रो क्वेश्चन आछि, but surprise will be there, but more or less question distribution समान अछि. So let us, I have categorized कि को पार्ट रो केते क्वेश्चन आछि. I will make a box for you and we'll write so that it will be easy for you. Okay, first thing is Odisha history. Odisha history, the mark is 30 mark. Modern India history, the mark is 30 mark. Okay. Then art and culture, mark is 40 mark. One element which you can see that OPSC this year distributed the marks equally, or whatever marks according to the weightage of those subjects. Okay. Art and culture 30 marks. Geography, जोटा OPSC generally importance दिया हुए नहीं, but they have asked 50 marks geography this time. And maximum weightage
was given to the society. Maximum what is given to the society, it is 110 marks. 40 30 70 30 100, that's all 250 marks. Okay, so you can see society is a high yield area for next year examination. 110 मार्क पड़ी सोसाइटी रु तेणु आपण माने जदि हिस्ट्री पढुचंती सोसाइटी पढु नांती किसी फायदा नहीं तेणु जानंतु क्वेश्चन कोड पढुची केमती आछी ठीक अछि तो if at all if you have any comment you can also post in the comment section. Okay, अच्छा, so this is the lesson. Expected line रे question थिला, direct question थिला, and this is the mark wise breakup of OCS 2023 mains. Odisha history 30, modern history 30, art and culture 40, geography 50, and society 110 marks. Okay, ठीक, highest weightage society. ठीक अछि, तो let us discuss the about the question paper per se. Okay, first expected question, analyze the cultural achievements of Mahameghavana Kharavalo Chedi dynasty. Okay, this was a direct question asked in our test series. Under the reign of Chedi dynasty, Kalinga reached the pinnacle of glory. In this light, discuss the achievements of King Kharavalo. These are direct question from the test series. Okay, ठीक है, एपट सेपट किछि नाही, डिस्कशन हेतला, क्वेश्चन केवल कल्चरल पचाइछि क्वेश्चन. ठीक अछि. सेकंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ अलेख महिमा धर्म, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आगुरो पीएस रे पढिछि, एथरो भी पढिछि. आमे डेफिनेटली एटा पकई थिबो, सेतरा किछि डाउट नाही. ओके, discuss the principles of Mahima Dharma, trace the evolution and teachings of Mahima Dharma in Odisha. 10 mark question, test series question. ठीक अछि, test series ना भी दिया जाइछि. ओके, ठीक अछि. नेक्स्ट, what role did the INA trials play in facilitating the process of Indian independence? INA trial aguru question पढिछि. ओके, important event in the Indian history, last to the independence struggle thला, last moment रे INA trial रो importance कोन you all know. And this was a question also UPSC question पढिछि. ठीक अछि, and we did not ask this question in the test series. Next, give an outline of the Swadeshi movement in Bengal between 1905 to 1908. Critically analyze the impact and freedom struggle. Very important, Swadeshi movement kahi ki, and because Swadeshi movement re pore revival of the national pride was one of the outcomes of the Swadeshi movement. Okay, national pride जो revival है by literatures, paintings, songs, everything. So that is important from the question perspective. Differentiate between generative city and smart city. Describe the feasibility of best smart city of Odisha. See, this is a question. Generative city concept बहुत पिला जान नथिबे. ठीक अछि, काहे कि ना generative city is something which is beyond smart. Smart माने कोन? Smart माने होछि we use the technologies. Okay, but generative city is something bigger than being smart. Generative city means it will promote inclusiveness, it will promote innovation. Technology is definitely there. ठीक अछि. So generative city does not include only technology. ठीक अछि. So generative city and smart city, and discuss the feasibility of best smart city of Odisha. You can write about the urbanization, smart city concept of what smart you need in Odisha. Smart mobility, smart metering, smart water connection, smart electricity connection. Okay, smart access to public places or the banks or any physically challenged persons. Okay, so everything is smart. So you can write how we can develop a smart city in Odisha. ठीक अछि, and this question not directly एवला question हमें फ्रेम करि पारिबानी केबे भी, and indirectly this was a question asked in the urbanization part. Okay, काहे कि ना waste management भी smart हवा दरकार, everything should be smart. Okay, challenges of urbanization and steps by government to address those challenges. Okay, you can take clue from the question. ठीक अछि, अच्छा. Then economy of Odisha reflects a paradoxical situation. Briefly discuss the reasons for this and suggest some important steps that can be taken for proper development of the state. What is paradox in Odisha's economy? Odisha economy re paradox one. Paradox is
कि हमर आइदर यू कैन राइट द पैराडॉक्स कि हमर नेचुरल रिसोर्स बहुत अछि ठीक अछि हमर नेचुरल रिसोर्स बहुत अछि बट आमे पुअर अच्छे इंडस्ट्रियलाइजेशन रे बैकवर्ड अच्छे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं पारुनी इंडस्ट्रियलाइजेशन रे पुअर अच्छे ठीक अछि देन कनेक्टिविटी हला ह्यूमन डेवलपमेंट हला सो दिस इज समथिंग पैराडॉक्स रिसोर्स थाई की भी हमें करि परने किछ ठीक अछि suggest some important steps that can be taken for proper development of the state development केमती ही परियो बाबा industrialization promote करिवा extensively discussed in a test series evaluate the role of industrialization in transforming socio-economic landscape of Odisha finished evaluate the role of industrialization in transforming the socio-economic landscape of Odisha see this question okay इतरे जहा कंटेंट कुहाइला डिस्कशन रे एवरीथिंग यू कैन राइट कौन इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन करि परियो what are the major hurdles and how can this be overcome to promote industrialization ए क्वेश्चन जेती कंटेंट ला डिस्कशन रे एवरीथिंग यू कैन पुट इनटू दैट क्वेश्चन ठीक अछि वेरी गुड चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीलिम प्रिपरेशन बेले जदी तुम माने भलो से कांसेप्ट क्लियर अछि तुम प्रीलिम प्रिपरेशन बेले ताहले मेन रे बहुत क्वेश्चन तुम करि परियो एम पढि छी क्वेश्चन GS2 रे GS2 रे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश वाला पड़ी हैला तो ड्यू प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश वाला लॉ एटा ओपीएससी दि तीन थर मन पकलानी प्रीलिम रे ठीक अछि तो प्रीलिमिनरी पर्सपेक्टिव जदी किछि कांसेप्ट क्लियर अछि ताहले मेन एग्जाम रे भी तमे से यूज कर लिखि परिबा आंसर ठीक अछि दिस इज वन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन Chennai and Mangalore approximately lie on the same latitude yet both places receive different amount of rainfall and different months why how do you foresee the role of Arctic Sea Indian monsoon system see first thing तो हमें देखिबा कि देखो हमें यदि ओडिसा रे हमें यदि इंडिया ज्योग्राफी देखिबा ताहले चेन्नई मैंगलोर ओके चेन्नई केते बेला रेनफॉल हुए चेन्नई रे ज्योग्राफी बई देखिबो कंबाइंड टास्क चेन्नई रे केते बेला रेनफॉल हुए मैंगलोर रे केते बेला रेनफॉल हुए ओके ओके रिट्रीटिंग मॉनसून नो कांसेप्ट कोन देखियो जाई एनसीईआरटी एनसीईआरटी बड़ होई किछ पढनी एनसीईआरटी हला बड़ होई पडले असुविधा तो तनो देन हाउ डू यू सी द रोल ऑफ आर्कटिक सी इंडियन मॉनसून सेप्टेम्बर रे गोटे न्यूज आर्टिकल आस्तिला दी हिंदू रे इन सेप्टेम्बर 2024 देयर वाज अ न्यूज आर्टिकल इन हिंदू okay that arctic sea melting has negative impact on Indian monsoon system कौन नेगेटिव इंपैक्ट सी मेल्टिंग एतला होची इंडिया रे मानसून कमी जाउची ठीक अछि सो सेटा पचारि काहे कमोची कोन पय होची द रीजन वी विल डिस्कस एक्सटेंसिवली ओके बट फॉर द टाइम बीइंग सी हाउ क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड ओके नेक्स्ट differentiate between strait and isthmus okay describe the significance of strait and isthmus in international trade it is a question related to maritime security okay maritime security रे हमें डिस्कशन भी कराई छी कि माने स्ट्रेट ऑफ मलाक्का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ठीक अछि काहे व्हाई स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज इंपोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का होची SLOC व्हाट इज SLOC भाई SLOC कोन हम कहया स्ट्रेट ऑफ मलाक्का SLOC कोन सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन तो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन रे इंटरनेशनल ट्रेड जाउची ओके ओके इंटरनेशनल ट्रेड आउ कोन जाउची सी लेंस ऑफ जदी स्ट्रेट रहउची पाक स्ट्रेट कोड अछि देखिबो ओके सब कहलो सेटा तो पाक स्ट्रेट मलाक्का स्ट्रेट ऑफ मलाक्का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओके स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तो तनो आमे देखिबा कि इंटरनेशनल ट्रेड रे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फास्ट जिंस होची गोटे स्ट्रेट देकी हमें गले बहुत बड़ सी लेन को हमें बाईपास कर जाई परिबा तमे मैप रे जाई कि मलाक्का स्ट्रेट देखिबो मलाक्का स्ट्रेट केते स्मूथली गोटे गोटे शॉर्टकट वे प्रोवाइड करूची गोटे लार्ज एरिया को बाईपास कर दोची ठीक अछि so that is the significance in the international trade okay short हे परिबो
लो कॉस्ट रे ही परिबो ओके एंड फिर भी लिखि परिबो कि चैलेंजेस कोन अछि चोक पॉइंट्स ओडा सब जदि मलाका स्ट्रेट चोक हे गला ताहले ट्रेड ठप ठीक अछि पायरेसी मेरीटाइम पायरेसी गोटे चैलेंज ठीक अछि सो दिस इज द जियोपॉलिटिकल जो वार चलछि ओके सेतर जदि गोटे स्ट्रेट बंद हे गला ताले ट्रेड बंद just I am giving the hint we will discuss those questions again okay next discuss the in detail the role of regionalism in shaping social cohesion okay regionalism syllabus ro achi society question 110 mark gudai question padichi society again next question aging bi achi and this regionalism question was also extensively dealt in the test what are the test question what are the factors contributing to development of regionalism critical analyze the impact on national integration and governance same content copy करके paste करो यूज करिया ओके ठीक अछि next what do you understand by population aging discuss its various dimensions in the context of india जो पिला माने डिस्कशन अटेंड करिसंती सिनाप्स मेंस टेस्ट सीरीज रे सेम क्वेश्चन एई क्वेश्चन रे मु डिस्कशन रे कहिदिले आपन मानको कि population aging जो अछि क्वेश्चन पढ़तला टेस्ट सीरीज रे रिसेंटली एज इंडिया बिकेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस गोइंग अहेड इन दिस रिगार्ड इंडिया बिकेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड तार अपॉर्चुनिटी कोन चैलेंजेस कोन डिस्कशन में मु कहितली कि चैलेंजेस रे मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज कि हमर डेमोग्राफिक डिविडेंड ता खत्म हे जिवो 2050 अराउंड ठीक अछि एंड विथ स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा आई हैव गिवन कि एजिंग हेला हमर प्रॉब्लम कोन हो extensively discussed ki aging this concept mo stress देइतली कि this can be a potential question and data दिया इतला लेखि के आस्थियो तुम ठीक अछि then next question is okay next question is expected question pvtg ठीक अछि प्रीलिम रे पढितला मेन रे भी पड़ला इंटरव्यू रे भी पचरा होची पीवीटीजी को छाडी होनी ठीक अछि पीवीटीजी ट्राइबल तम छाडी की ओडिसा रे सिविल सर्विस प्रेजेंट करया तमे ओके काहे कि ना सेमन होजने हमर आइडेंटिटी सेमन होजने हम माने हमरो हमरो फेस से माने ठीक अछि बिकॉज़ ट्राइबल कल्चर इज समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ ओके how many types of tribals are there in Odisha what are the issues and problems of particularly vulnerable tribal groups okay this exact question was asked in the test series that exact question kontla what are the particularly vulnerable tribal groups discuss the challenges faced by tribal population in India analyze the steps taken by government for upliftment of the tribal population पूरा content discussion content नंबर होइबो खाता किछ करिया ओके ठीक अछि नेक्स्ट discuss some important causes of rural poverty particularly poverty पचारला rural poverty ठीक अछि काहे कि ना urban poverty is something which is emerging okay migration पई सिना लोक माने बाहर भी होउछंती but they are facing poverty okay and yes poverty काहे के होउछि that multitude of factors responsible for poverty in urban area okay कोठी से चाकरी करथुए माने इनफॉर्मल सेक्टर रे काम करथुए से माने पाखरे किछि नथियो खाली जिबे काम करिक आसीबे जो 200 300 टा मिलला हां बस लो वेजेस अछि कि सोशल सिक्योरिटी नाही and that gradually traps them into the poverty cycle of poverty ठीक अछि ना urban poverty but rural poverty discuss some causes of rural poverty discuss some poverty alleviation programs which have been launched by government of India for the rural extensively हुआ है ठीक अछि समस्या जानि छो poverty is a complex and deep-rooted socio-economic issue in India and Odisha. Test series question. Despite the economic growth and cultural richness, in this context, highlight the poverty scenario of India and Odisha. Okay. Critical analysis initiative taken for poverty eradication. Same things. Copy paste content. Okay. Then group B. Enumerate the legacy of early Vedic Aryans. आर्ट एंड कल्चर रो क्वेश्चन पकेला ठीक अछि संगम एज एबे आर्यन वैदिक एज ओके अर्ली वैदिक आर्यन तो समस्त प्रीलिम पे पढिथो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अर्ली वैदिक सोसाइटी एंड लेट वैदिक सोसाइटी सोसाइटी रे कोन डिफरेंस थिला से माने को रिचुअल्स रे कोन डिफरेंस थिला रिलीजन रे कोन डिफरेंस थिला
वुमेन मान पोजिशन कौन थिला सभा कौन समिति कौन these are the contents to be written here yes early vedic society ठीक अछि give an account of development of science during the Gupta period बहुत पिला को प्रॉब्लम हेतिबो कोन कि केवल साइंस पचार बहुत कम जिंस ता भीतर थिबो पे लिखिया टे प्रॉब्लम है एनीवेज ओके हां यस समस्त पई समान रहबो सेटा ठीक अछि तो एंड आल्सो दिस क्वेश्चन partially we covered in the test series okay भगवान के नो 100% की मोर टेस्ट सीरीज हो पड़ियला we touched those areas which came in the paper that is all बाकी टेस्ट सीरीज नहीं गले कोन की पाई पळेबो ना ओके बस टेस्ट सीरीज नहीं की पिला किछि करना दे लेखुना दे किछि करना चल बट जो माने रिलीजियसली यूटिलाइज करछन दे आर गेटिंग द बेनिफिट बस परिश्रम करिया पड़े टेस्ट सीरीज फेसिलिटी हम टेस्ट सीरीज पढ़ला बोले हम टेस्ट सीरीज नहीं जाओ सेमती किछि रीजन नाही नो रीजन बिहाइंड ठीक अछि सेमती किछि लॉजिक नाही ओके इफ यू आर सीरियस देन that's the only thing that will help you yes and discuss the main contributions of Gupta period and Chola period to the Indian heritage and culture related question not direct question ठीक अछि so next question divide India into major physiographic division prelim basic physiographic division of Odisha okay north रे कोन रहला south रे कोन रहला west रे कोन रहला north east रे कोन रहला east रे कोन रहला ठीक अछि आउ मझे रे कोन रहला प्लेट्यू चलला आउ कोन ठीक अछि आउ समुद्र रे कोन रहला आइलैंड एति तो कोन physiographic division आउ हैला बस आराम लिख परियो and describe the region in which the land of Odisha state is included ओडिशा जो रीजन अछि तार फिजियोग्राफी लिख परियो जदि ओडिसा र फिजियोग्राफी जानि ताको भी लिख दे आस जस्ट ठीक अछि then and this is a question also we covered in the test discussed also or the salient features of major physiographic division of Odisha highlight the characteristic of coastal plains of Odisha okay next does climate change make the coastal and Himalayan regions in India more vulnerable to disasters yes definitely climate change ru hi disaster ro possibility बढ़ुची coastal region रे भी बढ़ुची and Himalayan region रे भी बढ़ुची yes लैंडस्लाइड हैला टूटी लैंड सब्सिडेंस हैला जोशीमठ रे हैला नि जोशीमठ जम्मू केस आल्सो यस जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस हैला ओके हिमालयन रीजन रे लैंडस्लाइड होची ओके बिकॉज़ इलीगल कंस्ट्रक्शंस आउ कोस्टल रीजन रे कोन होची कोस्टल रीजन आगुर केबे देखि जे अप्रैल मास रे बात्या हुए और एबे यस हां तुम बात्या हुए केबे अक्टोबर रे अक्टोबर मानसून सरला परे अक्टोबर आडू को बात्या हुए ओके से जो मानसून आसे से कोन करे बे ऑफ बंगाल जो साइक्लोनिक फॉर्मेशन थियो ता टाणी की भितरु नै आसे हां करी की भितरु नै आसे तो सेति में साइक्लोन पड़े अक्टोबर नवंबर बट फनी केबे आस्तला फनी आस्तला एप्रिल में ओके तो कोस्टल एरिया रे क्लाइमेट चेंज में इबला डिजास्टर भी होउची ओके एड लिखियो क्लाइमेट चेंज रे वनरेबल माइंड ओपन करी गले सब क्वेश्चन आसु इफ यू हैव रेड प्रॉपर्ली ओके परिश्रम करिया पड़ियो बाबा सेमती हैला बोले ओके ठीक अछि नेक्स्ट analyze the role of women organization promoting gender equality and women empowerment in Odisha discuss the steps taken by government of Odisha for women empowerment extensively पढ़ा है okay discussion में same question पढ़ा है करा भी है illustrate the role of women and women organization in socio economic and political development of various spheres and section of the society direct question content लेके थोयो किस करिया okay so this was about GS1 तो आपण पई स्ट्रेटजी कोन रहबो एबे स्ट्रेटजी कहबा ना नले केम देबो खाली बकर बकर ही गले किसी फायदा नहीं स्ट्रेटजी कहया पड़िबो कोन करिवो तमे फास्ट जिंस don't read too many books maths notes okay जहाँ मार्केट रे अछि
सब जगह पढ़िया को चेष्टा कर ना, ठीक अच्छे बेसिक निजर जहाँ अच्छी नोट्स बुक्स बेसिक बुक से बही को 2-3 थर पढ़ 4 थर पढ़ प्रिलिम पाई भी सही काम दब मेन पाई भी सही काम दब कहीं आजिकल मैटेरियल किसी अभाव नहीं ओके सब अच्छे पिला वीडियो भी अच्छे मैटेरियल अच्छे नोट अच्छे सब इंस्टीट्यूट अच्छे ओके इवेंट पिलांकर 2 वर्ष पढ़ू पढ़ी कौन somebody last 2-3 दिन तले गोटे पिला आस्था honestly confessed that UPSC प्रिपरेशन कली 2 वर्ष भूल भूल यार पसली ता भीतर मते सेट लागिला कि आई हैव टू रीड एवरीथिंग सब इंस्टीट्यूट रो मैटर लो बाहर थिला ठीक है सब एंड तापर फ्रस्ट्रेट ही ओडिसा पळे आसली मते कोन करिवो कोन ओके मुगले सब बहुत कमाई दियो जत्ते बही रखते सब कमाई दियो खंडे खंडे बही रख ओके डोंट रीड टू मेनी बुक्स बेसिक जिंस पढो प्रिलिम पाई भी पढो मेन पाई पढो इफ यू आर रीडिंग एनसीईआरटी फॉर प्रिलिम देन टारगेट करो कि मेन रे अदर क्वेश्चन कोन आसीबो बुझिला एटा हो स्मार्ट रीडिंग आ स्मार्ट रीडिंग नो कि पांचटा बही धरि बसिबे सविंदर सिंह पढी ओके माजी दूषण पढी भाई एनसीईआरटी तो सारा सेथुर क्वेश्चन पढुची नेक्स्ट पिला तो सविंदर सिंह भी ज्योग्राफी पढुछ अरे काहे एते पढुछ एनसीईआरटी होलसे पढ ठीक है बस क्वेश्चन सेथुर पढुची होउनी नेक्स्ट नेक्स्ट इज कि सिलेबस प्रॉपर्ली कंप्लीट करो ओके सिलेबस कंप्लीशन यस सिलेबस कंप्लीशन इज मस्ट ठीक अच्छे डेफिनेटली करिया पड़ियो सिलेबस छाड़ी की जाई हो थर्ड सबू करिवो न लिखिले हो राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपोर्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस इंपोर्टेंट कहीं ना परीक्षा रे यू विल ड्रैग इनफॉरमेशन फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड नॉट कि माइंड रे थिबो पळे आसीबो परीक्षा रे पूरा थॉट ब्लॉक सबकॉन्शियस माइंड रे इनफॉरमेशन ड्रैग करबे प्रैक्टिस दरकार सिंपल प्रैक्टिस इवन आई वुड माने पिला टेस्ट सीरीज लेखि लेखि की सर हाथ तो पेन हेलानी ठीक अछि सो मच डेडिकेशन हाथ तो पेन हेलानी ओके जे पाए थर तांगर इंटरव्यू करी देखियो से माने कहिबे दे विल ओपनली एक्सेप्ट कि हम टेस्ट लेखि लेखि कि हम हाथ पेन हिच परीक्षा पूर्व बहुत ला कहजन मुगले डेफिनेटली हाथ जदी पेन हिची परीक्षा दिस विल गिव यू रिजल्ट डोंट वरी ओके तो टेस्ट सीरीज लेखो एंड रिवीजन करिया पई फोर्थ थिंग यू शुड नो व्हाट टू रिवाइज एंड व्हाट नॉट टू व्हाट टू रिवाइज एंड व्हाट नॉट टू रिवाइज ठीक अछि बहुत पिला एमती माने एमती अछंती कि कानो सर डाकिबे कानो सर एक्सपीरियंस कहबे पिला माने लास्ट मोमेंट रे पिला बहुत पढ़ी केमती प्रॉब्लम फेस करछन प्लीज शेयर एटा पे जाने दरकार कि बहुत पढ़ी के पिला का प्रॉब्लम they become very anxious too nervous and at last sir I cannot remember anything क्या बस किछि मन पके पर I'm totally blank please help us out प्लीज हेल्प लास्ट को तुम कुआओ तुम देख तो जहां पढ़ी जो बैड छोड़ सेटा जो बंद कर सिलेक्टेड दिन सब पढ़ा एटलीस्ट यू अपीयर द टेस्ट रिलीजियसली सेती पढ़ी के से दे only practice can help yes that's the golden rule and it will effectively manage your time yes that's आउ किछि नाही प्रैक्टिस करो आउ सिविल सर्विस प्रिपरेशन क्लियर करिया पे ना ये शॉर्टकट किछि नाही ठीक अछि टेस्ट सीरीज नै गलो पाइबी सेमती किछि गारंटी नाही परिश्रम न करबो पूरा माने जेमती क्लींजिंग होनी सेमती पिला पढ़ी प्रैक्टिस करिकि तम ऊपर माडी पळेबे ठीक अछि तम बसिकी मेटल कलेक्ट करथो बी सीरियस प्रिपरेशन जदी करछो गिव जस्टिस टू योर प्रिपरेशन बेर लागी पारे कि मु एमती काहे कहूची कैन दिस द फैक्ट 3 वर्ष पिलाम को गाइड करे भितरे रैंकर मान को प्रोड्यूस करे भितरे यस प्लीज this is a hard hitting fact we have the experience since last 3 years many variety of students बहुत पिला यस काहे कि ना जेते पिला गाइड करे भितरे
सिनाप्स जी भी पाई जाइछन्ती ऑफलाइन स्टूडेंट्स दे ऑल नो कानू सर सो तेणु जानिया भितर बहुत पिला एभला मिस्टेक करूछन्ती Those who don't even think about them, Ah. they will do this kind of mistake. तेणु अनएक्सपेक्टेड तेणु बी सीरियस एंड वी ऑल वांट यू टू गेट रैंक काहे प्रिपरेशन करूछ हम आउटकम दरकार नले काहे करूछ आ बी सेल्फिश प्रिपरेशन इट सेल्फिश हो सेल्फिश नले कि छपन ठीक अछि ओके थैंक यू वेरी मच and we will discuss the paper 2 okay